Hello students, so today I am going to start the remaining example of miscellaneous exercise 5 from the topic applications of definite integration. In previous video lecture we completed the area between the two parabolas, right? One is open to the right side and other is open to the up side. ये सब parabola के तीन example मैंने last previous lecture में किए solve करके दिए. Now today I am going to start this example number 5 from the same miscellaneous exercise. Okay, so read the example carefully. First, find the area of the region in first quadrant. This geometrical given condition is important. हमें सिर्फ area first quadrant का ही find करना है. Bounded by the circle x square plus y square is equal to 4. X square plus y square is equal to 4. This is the standard circle, right? Whose center at the origin. And the x-axis means we have to integrate with respect to x, and the line x is equal to y root 3. Y root 3 means this line is definitely passing through the origin. So ये लाइन ओरिजिन से पास क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, +3 +2 -1 -5 ऐसी कांस्टेंट टर्म नहीं है. ये √3 y है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y. So this is the line passing through the origin, this is the circle, standard circle, and we have to find the area in the first quadrant. So important, we have to read the question very much carefully. हमें question carefully read करना है. Then write down one by one steps. So right here given circle is x square plus y square is equal to 4. Therefore, center at origin, radius is 2. 4 is 2 square, and given line is, what is given line? X is equal to y root 3. X is equal to y root 3. So ये intersection point find करना है. So therefore y is equal to x by root 3, so which implies y square is equal to x square by 3. Y square is equal to x square by 3. ये root 3 डिवाइड होगा, x by root 3 होगा. स्क्वेयरिंग किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 3. x का स्क्वायर x स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3. सो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर हियर. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4. सो दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12. 4 3 12. सो पहले तो हमने सर्कल ड्रॉ करना चाहिए और लाइन भी ड्रॉ करना चाहिए. सर्कल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3. यहाँ पर पुट किया मैंने एक्स स्क्वायर बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर एज इट इज. 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. सो देयरफॉर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, विच implies x square is equal to 3. So here x is equal to plus or minus root 3. So x की वैल्यू प्लस रूट 3 राइट साइड, x की वैल्यू माइनस रूट 3 लेफ्ट हैंड साइड. बट हमें सिर्फ एरिया किसका फाइंड करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस रूट 3 लेना ही इंपॉर्टेंट है. सो फाइनल x इज इक्वल टू ओनली रूट 3. x की वैल्यू रूट 3 पुट करो. देयरफॉर एट x इज इक्वल टू रूट 3, y becomes, y यहाँ पर रखो, रूट 3 बाय 3 is 1. रूट 3 बाय रूट 3, this implies y is equal to 1. So ये एक सर्कल, center at the origin, सिंपल स्केच निकालना है. नो नीड ऑफ एनी स्केल और एनी प्रोटेक्टर दैट किसी से डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज सेंटर ओ. सो ये रेडियस है, सो 2,0. ये लाइन यहां से पास होती है.
So therefore circle and line intersect each other at root 3 comma 1. So ये point है root 3 comma 1. This is root 3 comma 1. This is root 3 comma 0. This is radius. This is 2 comma 0. रेडियस अपनी 2 है. स्टैंडर्ड सर्कल की रेडियस कितनी है? वो 2 है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 4 इज 2 स्क्वायर. ये ओरिजिन है O, ये इसको P नेम देता हूं मैं यहां पर P. ये B पॉइंट और यहां पर C और D, ऐसा और एक नाम देंगे यहां पर C और D. देने की जरूरत भी नहीं है. C और D, D की जरूरत है, C की जरूरत है. ओके, so we have to find the area bounded by the circle and the line. So total area first quadrant इतना है, ये नहीं. So he has clearly mentioned find the area in the first quadrant. So ये 4 मार्क का एग्जाम्पल है. So this shaded portion is the actual bounded portion and we have to find out the area of this portion. So here area below the line, so this is OAPCO, this area below the line, and this OABPCO, this area below the circle, हम एक दूसरे को add करेंगे and that will be the required area. So root 3 comma 1 ये required area. ये root 3 comma 1 in the intersection point of the circle and the line. So circle को हम proper mention करेंगे. So therefore y square is equal to 4 minus x square, which implies y is equal to under root 4 minus x square, equation first, and line y is equal to x by root 3, x by root 3. ओके, दिस इक्वेशन सेकंड. हर एग्जाम्पल का मेजर स्टेप्स वही है, वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. सर्कल और लाइन का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया. दिस इज रूट 3 comma 1, राइट. सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, बेसिक ज्योमेट्री है, ये आपको आना ही जरूरी है, राइट. सो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड. नाउ वी कैन मेंशन द रिक्वायर्ड एरिया. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज, अब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? जो पूरा डार्क पोर्शन है वो अपना रिक्वायर्ड एरिया है. दैट इज OABPCO. OABPCO which is equal to area OAPCO OAPCO plus area ABPA. ये इतना एरिया, ये बिलो द सर्कल है, ये इतना एरिया बिलो द लाइन है. सो यू कैन मेंशन हियर area below the line plus area below the circle, which is equal to, below the line means lower limit 0, upper limit root 3, 0 to root 3. लाइन कौन सी है? x by root 3 dx plus below the circle root 3 to 2, root 3 to 2, lower limit root 3, upper limit 2,
circle is under root 4 minus x square dx. Under root 4 minus x square dx. So right, this is a 1 by root 3 as it is, constant taking outside. Integration of x is x square by 2 from 0 to root 3 plus this is a square minus x square, x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x by a from root 3 to 2. लास्ट डे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई किया है, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए फ्रॉम रूट 3 to 2. रूट 3 इज द लोअर लिमिट, 2 इज द अपर लिमिट, राइट. सो दिस इज 1 by 2 रूट 3. अपर लिमिट रूट 3 square is 3 minus 0. Root 3 square is 3 minus 0 plus now 2 by 2 1 4 minus upper limit put करो 4 यहाँ पर, so it's a 0. 4 minus 4 is 0 plus 2 by 2 is 4 by 2 is 2 sine inverse 1. 2 by 2 is 1 minus root 3 by 2. Root 3 by 2. 4 minus 3 is 1. 4 minus 3 is 1. Minus into plus is minus. 4 by 2 is 2. Sine inverse root 3 by 2. Root 3 by 2. So ये 2 अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट किया मैंने. So this becomes 3 by 2 root 3 plus 2 sine inverse 1. Sine inverse 1 is pi by 2. Sine inverse 1 is pi by 2 minus root 3 by 2 minus 2 root 3 by 2 sine root 3 by 2. root 3 by 2 ये वैल्यू साइन के टेबल में 60 डिग्री में है. 60 डिग्री मीन्स व्हाट, pi by 3. Pi by 3. So this is equal to 3 by root 3 is root 3. Root 3 by 2. 3 by root 3 is root 3. Root 3 by 2. Plus pi. Plus pi. Minus root 3 by 2. Minus 2 pi by 3. This term cancel. Now calculation is very clear. This is pi minus 2 pi by 3. So 3 pi minus 2 pi is pi. Pi by 3 square units. बाकी सब कैलकुलेशन है, so इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं किया, मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके दिया है. लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल वे है इसको so उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सर्कल, ये लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म इज नॉट देयर. वी हैव टू फाइंड द एरिया in only first quadrant, so minus root 3 नहीं जरूरी नहीं है. So it is plus root 3 only. This is the point root 3 comma 1. Here is the single point where circle and line intersect each other. Circle और line एक दूसरे को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पर root 3 comma 1 इधर भी इंटरसेक्ट होता है, लेकिन ये क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड है, सेकंड थर्ड में है पॉइंट, राइट. सो नाउ सर्कल का रेडियस 2 है, दैट्स व्हाई दिस इज द रेडियस, दिस लाइन इज द रेडियस. This is 2 comma 0. So पहले 0 to root 3 below the line, root 3 to 2 below the circle. This portion is the below the circle and this portion is below the line, and total combined area is A. This is A1 plus A2. This is total A. सब clear है. So answer is what, pi by 3 square unit. This is the first example of today's, that is fifth example. Very important for 4 marks. Okay, we'll take next. Now next example, find the area of the region bounded by the parabola. Again parabola, y square is equal to x, means obviously open to the right side, and obviously vertex at the origin because standard form में parabola है, and the line y is equal to x. Again same, this line is also passing through the origin,
एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड करना है. सो कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन parabola is y square is equal to x. Therefore, vertex at origin and line y is equal to x passing through origin. सो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है. सो पहले दोनों की एक साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे. देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y स्क्वायर इज इक्वल टू x. सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू x, विच implies x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0. टेकिंग x कॉमन, x minus 1 is equal to 0. So first value of x is equal to 0 and second value of x is equal to what? 1. So here at x is equal to 0, y is also 0. At x is equal to 1, y is also 1. x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 मिल जाएगा. So therefore parabola and line meets at 0, 0 and 1, 1. So this is a regular procedure here. Intersection find करना. Meets means intersection point. So this is the line. This is x axis, y axis. This is the parabola. ए पैराबोला. हम ये लाइन है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हमें जो एरिया फाइंड करना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना है. सो दिस पैराबोला एंड दिस लाइन मीट्स एट ओरिजिन एट 1, 1. This is a point 1, 1. Obviously this is 1, 0. और जो भी हमें एरिया फाइंड करना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फाइंड करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट उन्होंने क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमें ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते. ये लाइन भी ओरिजिन से पास होती है, बट जो भी एरिया आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई ड्रॉ द लाइन इन दिस वे. सो we'll get the area in the first quadrant. So I will shade the portion which is bounded portion, bounded by the parabola and the line. ये हम इसका एरिया फाइंड करना है. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. हम ऐसा एरिया फाइंड कर सकते हैं. ये कोई फिक्स डायग्राम नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, पैराबोला नहीं है. ऐसा कौन सा भी कर्व का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो हियर ये पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, दिस इज C and D और B and C. So here therefore अब पहले कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे. y स्क्वायर इज इक्वल टू x. देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y कितना होगा? रूट x होगा. दिस इज पैराबोला इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड y इज इक्वल टू x, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ये भी इक्वेशन सेकंड. अब फाइनली वी हैव टू मेंशन द एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है? OCPBO. OCPBO which is equal to area OAPBO. OAPBO minus
ये जो ब्लैंक पोर्शन है बिलो द लाइन है, ब्लैंक पोर्शन कौन सा है? एरिया ऑफ ओ ए पी सी ओ, ओ ए पी सी ओ, सो विच इज इक्वल टू एरिया बिलो द पैराबोला माइनस एरिया बिलो द लाइन, एरिया below the line. So obviously from 0 to 1, both from 0 to 1, 0 to 1. What is parabola? Root x dx. 0 to 1, x dx. Line is x. With respect to x find करना है. So here root x means x raised to half. X raised to half का integration x raised to 3/2 upon 3/2. From 0 to 1, x का इंटीग्रेशन x square by 2 from 0 to 1. x raised to half, x raised to half plus 1 upon half plus 1, that is x raised to 3/2 upon 3/2. upon 3/2 इसको 2/3 लिखेंगे. in bracket 1 raised to 3/2 minus 0 raised to 3/2, 1/2 outside, 1 square minus 0 square, 2/3 minus 1/2, 4 minus 3. 4 minus 3 is 1. 1/6. So what is actual area? 1/6 square units. अब तो प्रोसीजर सब समझ में आना चाहिए. सब एग्जाम्पल एक जैसे, सेम. ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी सेम, वेरी सिमिलर. सिर्फ आपको वही एल्गोरिथम फॉलो करना है. जो भी कर्व दिया है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना और वो कर्व आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा कर्व है. पैराबोला है तो उसका वर्टेक्स इंपॉर्टेंट, सर्कल है तो उसका रेडियस और सेंटर इंपॉर्टेंट, लाइन इज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन और नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसका इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद वो माइनस करना है, ये प्लस करना है. ये जो प्रीवियस 5 और 6 एग्जाम्पल आप कंपेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने दोनों एरिया को ऐड किया बिकॉज वहां पर कंडीशन वैसी थी. फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया ऐड करने के बाद हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलता था. यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए ये ब्लैंक पोर्शन हमें माइनस करना था, राइट. सो इट इज एब्सोल्युटली एवरी टाइम डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल आफ्टर दिस नंबर 6. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. ये भी बड़ा एग्जाम्पल है. Find the area enclosed between this circle x square plus y square is equal to 1. ये स्टैंडर्ड सर्कल है बट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है बिकॉज जिसका रेडियस 1 होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होता है. एंड द लाइन x plus y is equal to 1. ये लाइन नेवर पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हमें एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में का ही फाइंड करना है. सेम अगेन सिचुएशन तो हर एग्जाम्पल में अलग अलग होती है लेकिन प्रोसीजर तो एब्सोल्युटली सेम है. सो गिवन सर्कल इज x square plus y square is equal to 1. Therefore center at origin radius 1 and line is x plus y is equal to 1. अब ये लाइन और सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है फाइंड, लाइन के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. लाइन कहाँ से कहाँ पास होती है हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? x की वैल्यू 0 रखो, यू विल गेट ऑब्वियसली y की वैल्यू 0 रखो, यू विल गेट ऑब्वियसली x 0 y1 y0 x1. सो देयरफॉर गिवन लाइन passing through the points 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 कैसे फाइंड किया? ये जो लाइन है x plus y is equal to 1, x की जगह 0 रखो, y1 मिलता है, सो दैट इज 0, 1. y0 रखो, x1 मिलता है, सो 1, 0. दिस इज द पॉइंट 1, 0 and 0, 1 where the given line passes, right? So now we have to draw the diagram. Actual diagram हम draw करेंगे
and obviously we have to find the area in the first quadrant. So this is the circle. Circle center at origin. और ये रेडियस है ये रेडियस में सेंटर और सरकमफ्रेंस का कौन सा भी पॉइंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको रेडियस मिलती है. सो दिस इज द लाइन. हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये लाइन ये लाइन. So this is 1, 0. This point is 1, 0. This point is 0, 1. Radius also 1. This is the origin. O coordinate always 0, 0. So no need to write 0, 0. And this is the bounded portion. Make it shaded. We have to find the area of this portion. हमें इसका एरिया फाइंड करना है. So by diagram it is very clear. एरिया बिलो द सर्कल माइनस एरिया बिलो द लाइन. हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते, सब इतना लिखना जरूरी नहीं एवरी टाइम कि नोटेशन लिखो. ये अगर पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म में डायग्राम है सर्कल लाइन, तो नो नीड टू राइट एवरीथिंग एवरीवेयर. So required area is area below the circle minus area below the line. So circle y square, from that we can write y square is equal to 1 minus x square. Therefore y is equal to under root 1 minus x square. Equation first. From line we can write y is equal to 1 minus x. Equation second. यहाँ पर मैंने एक साइड कंपेयर क्यों नहीं की, बिकॉज ये लाइन obviously passing through 1, 0 and 0, 1, because I replace their x is equal to 0 by getting y is equal to 0, will get x. So here this is a procedure, one more procedure to draw the line on the coordinate system. Area below the circle, area below the line. So mention here, limits are very clear, origin to 1 है. So here integration from 0 to 1, circle is under root 1 minus x square dx. Integration from 0 to 1 minus x dx. ये प्लस एक्स इधर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स इधर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दैट द कर्व मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, बिकॉज हमें सब विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है. और यहाँ पर क्लियरली मेंशन एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो यहाँ से भी लाइन वो ड्रॉ हो सकती है, ये इधर ऐसे दूसरे ये पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो सकती है, ये लाइन से पॉइंट ड्रॉ हो सकती है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है, सो दैट्स व्हाई लाइन ड्रॉ द लाइन हियर. ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सो दैट्स व्हाई वी मेंशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो नाउ इंटीग्रेशन फाइनली x by 2 under root 1 minus x square plus a square by 2 sin inverse x by 1 from 0 to 1 minus 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x square by 2 from 0 to 1. So it is a square minus x square, x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by n. So put it upper limit 1 by 2 1 minus 1 0 plus 1 by 2 sin inverse 1. Replace first upper limit minus lower limit 0 by 2 0, ये तो टर्म 0 हो जाएंगी, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, साइन इनवर्स 1 by 2 साइन इनवर्स 0
1 by 2 sine inverse 0, and then here in second bracket minus 1 minus 1 by 2 minus 0 by 2. Upper limit first put किया 1 minus 1 square by 2 is 1 by 2. Lower limit obviously 0 minus 0 by 2. Sine inverse 1 is pi by 2. Sine inverse 0 is 0. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So here required area is 1 by 2 common निकालो in bracket pi by 2 minus 1. This is required area in square units. अगर आप ये एग्जाम्पल रेगुलर प्रोसीजर से भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा. रेगुलर प्रोसीजर इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट. बट हियर this circle and this line obviously intersect each other. Here this point 0 1 and 1 comma 0. So we can mention here the given line and the circle meets at 0 1 and 1 comma 0. Okay, so here and मैंने यहाँ पर एक चीज स्किप की है कि यहाँ पर नोटेशन मैंने नहीं दिया, कुछ जरूरत नहीं थी एग्जाम्पल में, बिकॉज ये सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है. ये लाइन भी उस रेडियस को ही कट करती है, एंड पॉइंट को 1 0 एंड 0 1. So no need to mention the notation for this particular example. So answer is what? 1 by 2 into bracket pi by 2 minus 1 square units. So this is the example number 7. So today these 3 examples is sufficient. We'll take more example on next video lecture. We'll stop here. Thank you very much.